techniques are very time-consuming and are very expensive. Решением второй проблемы стала работа с 3D-моделями эритроцитов. Вы можете посмотреть на них. Да. The 3D models of the red blood cells. У вас в руках получается эритроцит женщины, а у вас эритроцит мужчины. And both the leaders very keenly listening to the students about their innovative model. Например, в ходе нашего процесса мы выяснили, что один из участников имеет анемию. Соответственно, кроме того, они отличаются внешне. Это связано с тем, что человеческие характеристики прямо коррелируют с параметрами крови. Например, женская клетка, женский эритроцит, он будет ниже, чем мужской. केवल आपके बॉडी की एक बूंद से हम आपके दिनचर्या के सारे स्टेट. So this project aims to separate plasma from the blood in an efficient and low cost manner. Thank you. Thank you for your attention. This is the innovative model in the agriculture space. ये जो इनोवेटिव मॉडल है खास तौर पे किसान मित्रों के लिए बहुत लाभदायक हो सकता है. कैसे वह अपनी फसल की जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उसे भी लाभकारी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं. It will grind here and the compression happens in this part. After getting the compression, some solid will get. So from that solid we can extract silica, and there are so many other advantages too. Then we can convert the solid into paper cups, then so many biodegradable materials. The advantages by using this is the farmers can increase their economic condition by selling the straw. Then the second one is we can stop air pollution, and the third one is we can reduce the plastic. This is our main intention. They put together in 4 days. They even did all स्टूडेंट्स माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जी को अपना मॉडल समझाते हुए तेजस और अतुल, भारत के विद्यार्थी, और रूस के विद्यार्थी डायना और अलीसा Булочки с маком нельзя? Нет, Get any pies from here, unfortunately. Хорошо, молодцы. Can we take a photo? Okay, come on. The last one, चलो दौड़ो. यकीनन ये इनोवेटिव विद्यार्थी दोनों ही लीडर्स को मिलके बेहद प्रसन्न हुए होंगे और इस ग्रुप फोटोग्राफ को हमेशा याद रखेंगे. तीसरा इनोवेटिव मॉडल ऊर्जा के क्षेत्र से है. जिम में हम लोग जाते हैं, एक्सरसाइज भी करते हैं और इस मॉडल द्वारा मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है. Огромная часть технических достижений в наше время основана на использовании электроэнергии в том или ином виде. В связи с ее активным использованием возникает большое количество экологических проблем. И поэтому сейчас очень актуальны поиски новых систем электроэнергии. Кроме того, всегда актуальна проблема здравоохранения. В нашем проекте мы постарались сложить
So even as one uses this model, say on any equipment in a gym or a bicycle, alongside one can create energy that can charge their phones, laptops, power banks. This is the miniature version, a prototype, which can then be attached to, say, a cycle, as we can see on the exhibition booth. Kashish and Yogesh, the Indian students, demonstrating the model to the Russian President Vladimir Putin and Prime Minister Modi. Ivam and Yulia, the Russian students, a collaboration under Atal Innovation Mission and Sirius Creative School. ये मीटर देख सकते हैं हम कितना इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे। फिर आप देख सकते हैं कि हम कितना इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करें, वो मीटर द्वारा हमें दिखाई दे रहा है। 15 minutes we can generate a storage of 8 hours. So this can be placed at public places. We already have such devices, but this is something that we have developed for individual use. Any individual can go and just cycle and charge their phones. So we can have a picture with you. Please come, immediately. तो वाकई ही बेहद रोचक मॉडल। आप 15 मिनट साइकिलिंग करिए, जिमिंग करिए और साथ ही साथ ऊर्जा को स्टोर भी कर सकते हैं। हाल ही में माननीय प्रधानमंत्री को संयुक्त राष्ट्र का चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड भी मिला और ऐसे इको फ्रेंडली ऑप्शन पर्यावरण संरक्षण में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगली जो एग्जीबिशन बूथ है वो भी बहुत रोचक है। यहाँ मोबिलिटी से जुड़ा एक इनोवेटिव मॉडल है। यदि आप हेलमेट नहीं पहनेंगे तो जो ये स्कूटर है वो स्टार्ट ही नहीं होगा। सेफ्टी इन टू व्हीलर। Если шлем не одет, на экране показывается, пожалуйста, оденьте шлем. Если же мы одеваем шлем, система начинает работать и дает возможность завести мотоцикл. Presently, young generation students are riding the two-wheelers with very high speed, leading to injuries and accidents. So they are trying to solve it. Для того, чтобы уменьшить количество аварий, связанных с нарушением скоростного режима, мы придумали такую систему. Обычно аварии совершают новички, поэтому мы решили разделить пользователей на две группы: новички и более опытные пользователи. Для новичков есть свой ключ, для опытных пользователей есть свой ключ. И таким образом, используя разные ключи, мы можем задавать разные ограничения скорости. और इन कीज़ को यूज़ करके हम अलग-अलग स्पीड सेट कर सकते हैं। Till today, we haven't got any of the technology to minimize or avoid the accidents. So we have a solution for this. И для того, чтобы уменьшить количество аварий с мотоциклами по причине их опрокидывания, мы решили использовать третье колесо на мотоцикле. Если случается какая-то аварийная ситуация и мотоцикл достигает критической отметки, выбрасывается колесо и помогает ему сохранить свою позицию. Спасибо. So we are happy to have you with us and have a great interaction with you, and thanks for the technological collaboration, and moreover thanks for the intercellular collaboration. So we would like to give you a small vote of appreciation. This is thank you. Ой, пожалуйста. Да, извините, пожалуйста. Спасибо большое за такую возможность, и мы надеемся на дальнейшее сотрудничество с Спасибо. Спасибо. Good afternoon, sir. Good afternoon. अंतरिक्ष यानी स्पेस हमेशा से ही जिज्ञासा का विषय रहा है और अब जब माननीय प्रधानमंत्री मोदी ने 15 अगस्त को लाल किले के प्राचीर से मैन्ड मिशन की बात की थी तो स्पेस पर और भी काम हो
इस पर युवाओं का ध्यान आकर्षित हुआ है। Geostorms are the temporary disturbance to the Earth's magnetosphere, and it might have very adverse effects on the Earth's atmosphere. Like it can disturb the electric grids in the space and satellites, and it also disturbs navigation systems. And according to research and stats, it says that 70% of heart attacks occur during the geostorms. So we have found out the solution that how to basically predict the data for geostorms. В ходе решения проблемы мы разработали математическую модель, основанную на машинном обучении и базированную на эмпирических данных космического телескопа ГОУС. Для визуализации нашей модели мы подготовили голографический дисплей. Наша модель позволяет предсказывать геомагнитные бури и области их распространения на Земле для того, чтобы выявить предварительные меры для сведения ущерба от геомагнитных бурь к минимуму. В будущем, в марте 2019 года в образовательном центре «Сириус» в ходе космической программы «От Роскосмоса» мы будем разрабатывать солнечный парус, который позволит улучшить нашу модель и увеличить сроки предсказания геомагнитных бурь. Мы очень надеемся, что у этого проекта будет прекрасное будущее и что наш солнечный парус будет Что, готовы ответить на вопросы? Да. То есть вы будете изучать волновые движения в космосе, да? You'll study the waves and orbitals Собственно, мы in space. изучаем взаимодействие солнечной фазы с экстрасенсорной фазой, с магнитосферой Земли. सोलर प्लाज्मा के अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की कैसे इंटरेक्शन होती है। Это первый хороший шаг к изучению происхождения Вселенной. That is a very good step towards studying how the universe originated. Интересно очень. Very interesting. So sir, can we have a picture together? So this was about predicting geostorms in space. What problems are faced by geostorms? They could lead to failure of satellites, electric systems in space, and therefore this is an innovative model to predict the geostorm. Sirius Creative School की बात करें तो Sirius का मतलब भी एक ब्राइट स्टार ही है, और जब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस के शहर सोची गए थे तो वहाँ पर उन्होंने ऐसे ही इनोवेटिव स्टूडेंट से इंटरेक्ट किया था और पूछा था आप में से कितने लोग भारत आना चाहते हैं। तो लगभग सभी विद्यार्थियों ने हाथ खड़ा किया था, और आज ये मौका आया है जहां पर दोनों ही लीडर्स स्टूडेंट्स के साथ इंटरैक्ट करेंगे। Ladies and gentlemen, a very warm welcome on this special occasion where we celebrate the spirit of innovation in a first of its kind event on an international platform in India in partnership with Atal Innovation Mission, Niti Aayog and Sirius Education Center, Russia. We heartily welcome President of the Russian Federation, Honorable Vladimir Vladimirovich Putin, and Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi. Our heartiest welcome to all students and participants. We have a remarkable set of 20 children, which includes 10 students from the Sirius Education Center in Russia and 10 students from the Atal Tinkering Labs. For the last 4 days, the campus of IIT Delhi has been abuzz with these young minds along with their mentors who've been busy creating prototypes in 5 diverse sectors of space technology, healthcare technology, smart mobility, clean energy, and agri-technology. We also have talented and meritorious students selected by the Central Board of Secondary Education and Indian winners of Science Olympiads. Now before you, we present a short video on the International Innovation Exchange Program between India and Russia. Take a look. The Atal Innovation Mission, an initiative of Niti Aayog to promote innovation and entrepreneurship across the length and breadth of India. AIM is an umbrella innovation organization playing instrumental role in alignment of innovation policies, incentivizing the establishment and promotion of an ecosystem of innovation. A major role has been played by the Atal Tinkering Labs, that is ATL, which has been promoting innovations at school levels, which allows students to create innovative solutions for societal benefit.
Since the inception of the first Atal Tinkering Lab in 2016, the journey has been long, which has involved participation of more than 8 lakh young innovators who've nurtured their creativity, offering innovative solutions to realize the development goals of the country. Continuing with the tempo of innovation, there have been a series of competitions, and now finally we have the winners of ATL who for the first time are showcasing their competitive spirit with the students of Cirrus Science Center in Russia, which is the Indian counterpart of Atal Innovation Mission. For the last 4 days, students of Cirrus Educational Center and winners of Atal Tinkering Labs have been working to scout the innovative solutions in 5 different sectors, which are space technology, healthcare, agri-tech, clean technology and smart mobility. In less than 30 hours, these young minds from Russia and India have not only identified problems and solutions, but have created the prototypes which will benefit both the nations in the long run. Cultural and technological research exchange programs have been a hallmark of the friendly relations between India and Russia from time immemorial. But what is unique this time is the engagement of budding innovators who are becoming the torchbearers of the innovative spirit of the 21st century world with an aim to innovate. So innovation and the innovative spirit being cherished by India and Russia. Now I invite Mr. R. Ramanan, Mission Director, Atal Innovation Mission, and Ms. Elena Vladimirovna Shmelova from Sirius to exchange the Memorandum of Understanding between AIM and Sirius. Thank you so much. This moment today has been a unique opportunity for these young innovators to interact with President Putin and Prime Minister Narendra Modi. Both these leaders have paid special attention to nurturing young talent and inspiring the young minds. Now I call upon a few students to field their questions to President Putin and Prime Minister Modi. Now the first question comes from the Russian student Ekaterina Ivansova. Can we just pass over the mic to her, please? Yes. Thank you. Namaste, Narendra Modi. Здравствуйте, Vladimir Vladimirovich. Hello, Mr. Minister. Hello, Mr. Putin. Today, in Russia, we celebrate the Day of Teacher. Therefore, I have a question. Which role have teachers played in your life? I would like to hear the views of both leaders. Thank you. Together with Mr. Prime Minister, it's working, right? Yesterday, together with Mr. Prime Minister, we met with him in the evening. He invited me for a dinner, and he said that so the mic is on, I guess. Yesterday, we had a dinner with Mr. Prime Minister. He invited me for a dinner. We talked about a lot of serious issues. One of them is education. We have found out that the Day of Teacher in Russia is celebrated on the 5th of October. In India, it's celebrated on the 5th of September. So it looks like education is something that receives a lot of attention in Russia and India. We're working on this, on strengthening the importance of this area, both in theory and practice. And the evidence of this is this meeting in India, because Russia and the USSR have established the system of education institutions, diplomatic institutions and schools. And
Right now, the educational center Sirius unites and brings all talented people together. India is also developing this area. It's good that thanks to the initiative of Mr. Prime Minister, you were gathered here today. I hope it will be a good push forward for further contacts, not only among you, but also among your peers. As for the influence of teachers upon all of us, it is, of course, important. Parents are important, family is important. And the moral values of the family are important. But upbringing and education is definitely something that plays a huge role because it depends on teachers and their attitude towards education and children. Taking advantage of this opportunity, I would like to once again congratulate all teachers of Russia. So I congratulate, and teachers of India, congratulate everyone. भारत में शिक्षकों के लिए शब्द प्रयोग होता है गुरु। अगर अंग्रेजी डिक्शनरी में देखेंगे तो गुरु शब्द अंग्रेजी डिक्शनरी में भी है। और हम सब ने अनुभव किया होगा, दुनिया में किसी भी महापुरुष से बात करोगे, जानोगे, तो दो लोगों का उल्लेख वो अवश्य करते हैं। उनके जीवन में उनकी माता का और उनके टीचर का, इन दो लोगों का महत्वपूर्ण योगदान है। मैं जब मुख्यमंत्री बना था आज से 18 साल पहले, तो मेरे मन में एक इच्छा थी कि मेरे जितने टीचर्स ने मुझे पढ़ाया है उन सबको मैं इकट्ठा करूँ, मेरे घर बुलाऊँ और उनका सम्मान करूँ। तो मैंने खोजा क्योंकि हमारा नाता बीच में काफी टूट गया था। तो करीब 32 टीचर जीवित पाए गए, मिले मुझे। उसमें एक जो थे वो 93 ईयर के थे। उन सबको बुलाया, बहुत बड़ा सार्वजनिक समारोह करके मैंने उनका सम्मान किया कि आपने मुझे बचपन में शिक्षित किया था, संस्कारित किया था, मेरे जीवन को दिशा दी थी, और उसी के तहत मैं आज ये काम कर रहा हूँ। और आप मुझे आशीर्वाद दीजिए, आगे इससे भी अच्छा काम करूँ। मेरे जीवन में टीचर को मैंने इस प्रकार से देखा। आज के युग में हम गूगल गुरु के ज़माने में हैं। कुछ भी पूछना है तो गूगल को पूछो, कुछ भी जानना है तो गूगल से जानो। और उसके कारण गूगल गुरु के ज़माने में टीचर का महात्मा कहीं कम न हो जाए, ये हमने सतर्क रहने की ज़रूरत है। जानकारियाँ देने के लिए तो बहुत रास्ते होते हैं, लेकिन ज़िंदगी बनाने के लिए कोई न कोई हमें उंगली पकड़ करके चलाने वाला चाहिए। वो या तो माँ होती है या कोई एक व्यक्ति होता है जिसका टीचर का ही रूप होता है, वो हमारी ज़िंदगी को बनाता है। भारत के जीवन में शिक्षक का वो स्थान रहा है, ऋषि परंपरा से रहा है, और दुनिया में हर देश में शिक्षक के प्रति वो भाव भी है, शिक्षक का वो महात्मा भी है। तो हम लोगों की ज़िंदगी में वैसा ही है। Thank you so much, Prime Minister Narendra Modi and also President Putin. But our interaction with the student continues, and we have some more questions coming. The next student who has a question is Sanchit Agarwal. So, I have a question for the Honorable President of Russia, Mr. Putin. Sir, can you please tell all of us who is the scientist that impresses you the most? Это тоже зачем забрал? Забрал действующий. Why did you take away the mic that was working? Why did you take it from me? He took the working mic from me. Maybe he didn't want me to answer the question. I don't know. You know, saying which scientist impresses me most is the same thing as saying which piece of art impresses me the most. It's hard to say. It's hard to say which book or which piece of music impresses me the most.
We have a whole system of external factors, art, education. Of course, I can list all scientists, starting with Plato and all other scientists. They have all contributed significantly to the newest history. They have made a unique contribution to the development of humankind. These are not just talented people. They're very happy people. I really envy those who devote their lives to science, because science, as any art, is the most interesting thing one person can do, because it brings satisfaction and, while paying tribute to previous generations of geniuses, I would like to express hope that your generation will also make us happy with your achievements and make a contribution into development of humankind. I wish you every success. Thank you so much, President Putin. The next question comes from Elizaveta Zabelina. Добрый день, уважаемый Нарендра Моди, Владимир Владимирович. Я Забелина Лиза, лицей номер 19, город Королёв. В августе 2018 года я присутствовала на конференции с участием главы Роскосмоса. Дмитрий Олегович отметил, 2017, I participated in an event organized by Roscosmos. маловероятно. Как вы считаете, возможно ли осуществление лунной программы между стран БРИКС? Спасибо. Еще раз повтори, пожалуйста, погромче. What do you think about space cooperation programs of BRICS? При создании лунной программы стран БРИКС. Спасибо. I must say that cooperation between BRICS countries, and this association has been created not very long time ago, brings meaningful contents to various areas. We are working together on finance. We have created a very modern and much promising financial instruments. We are agreeing on cooperation in other areas. Art, for example, we are thinking about cooperating more closely in humanitarian area. This is all possible, of course. And as concerns the future of our contacts with, I think that Mr. Prime Minister won't object that. If it's not in the agenda, we'll have a look at it and we will discuss it together with colleagues. Thank you so much, President Putin. The next question comes from Aryan Magnani. I have a question for the Honorable President of Russia. Sir, could you please tell us, according to you, which field of research should be prioritized over others? Well, you know, humankind cannot exist without new discoveries in physics and maths. Right now, such topics as genetics are receiving more attention. Biology, for example. The 20th century was the century of physics. The 21st century is the century of biology. Well, but we should understand it in a broader sense. And talking more precisely, this has to do with genetics, with genome development. The full disclosure of genome. Today it costs just a couple of dozens of thousands. In the near future it will cost $1,000 or $100. This changes fundamentally the approach to genetics and genome, to healthcare in general, to medicine in general. Some unbelievable horizons open up in front of humanity and humankind.
But from the point of view of theoretical and fundamental science, it's also important to research the origins of our universe. This is of practical importance. This has to do with navigation, with outer space exploration, with aviation. All this is very intertwined and interconnected. There are some more fashionable areas for research, of course, but everything that has to do with fundamental research will sooner or later turn into applied sciences. This is our understanding, the one that we've always had. Russia and India, all other states in the world, leading states in the world, who enjoy good scientific traditions, academic traditions, we will pay growing attention to fundamental and applied sciences. Thank you so much, President Putin. And this brings us to the end of the student interaction and the question and answer session. And now I would like to request Honorable President of Russia, Vladimir Putin, to share his thoughts on this occasion. Я вроде как раз этим часто занимался, но я в завершение хочу вас всех поблагодарить за тот интерес, который вы проявляете к сотрудничеству. Уверен, что with your counterparts, I'm sure that interaction between young people, especially between school children, would be a great addition and perhaps the most important addition to the unprecedented level of Indian and Russian relationships which we see these days. This is the basis for long-term cooperation. And I would like to thank you for that and wish you every success in your work. Thank you. A heartfelt thank you to President Putin for his inspiring words. And now I would like to request Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi to share his thoughts. फ्रेंड्स, राष्ट्रपति पुतिन के साथ मेरी बहुत घनिष्ठ दोस्ती है, लेकिन अब तक उनसे जो मुझे मिला है उसमें अगर मैं कहूँगा एक सर्वश्रेष्ठ उपहार मुझे मिला तो पिछले दिनों वो मुझे सोची ले गए, और सोची ले गए उतना ही नहीं, उन्होंने बड़ा आग्रह करके मुझे सीरियस कैंपस में ले गए और आप सब बच्चों के साथ मुझे मिलने का अवसर दिया। अगर वो मुझे वहाँ नहीं ले जाते, सिर्फ मैं सुनता कि भाई ऐसे एक श्रीमान पुतिन ने एक इंस्टीट्यूट खड़ी किए हैं, बच्चे आते हैं, तो मुझे इतना अंदाज नहीं आता जितना वहाँ देख करके मुझे आया। शायद रशिया के भविष्य के लिए राष्ट्रपति पुतिन का ये सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है, मुझे लगता है। उनकी पूरी इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी को, कमिटमेंट को, इमोशंस को इस काम में उन्होंने खपा दिया है। और जब मैं वहाँ आया तो मैंने सब बच्चों से कहा कि आप में से हिंदुस्तान कौन आना चाहता है, और मैंने देखा सबने हाथ ऊपर किया था। तो उस दिन मैंने कहा था कि मैं आपको बुलाऊंगा। तो राष्ट्रपति पुतिन मुझे जब जोहान्सबर्ग में मिले तब मैंने उनसे आग्रह किया था कि आप आइए, लेकिन अगर बच्चों को लेकर आते हैं तो मुझे अच्छा लगेगा। मेरी बात को उन्होंने माना और आप सबको यहाँ लेकर के आए, और पिछले एक सप्ताह से भारत के प्रतिभावान बच्चे, रशिया के प्रतिभावान बच्चे, लैंग्वेज का कोई बैरियर नहीं है, उनका इंटेलेक्ट काम कर रहा है, उनका साइंटिफिक टेम्पर काम कर रहा है, और दुनिया की समस्याओं को समझते हुए इस उम्र में हम क्या दे सकते हैं, इस पर आप लोगों ने अपना समय दिया। आज जो हमने 5 प्रोजेक्ट देखने का मुझे अवसर मिला, वाकई मुझे लगा कि आप समस्याओं और संवेदनाओं को भली भांति अपने में समाये हुए हैं, और तब जाकर के इस प्रकार के इनोवेशन का विचार आता है। तो आज जो प्रोजेक्ट बनाने वाले और पूरी टीम को मैं रोज पूछता था कि भाई इन बच्चों का कैसा है, वो कंफर्टेबल है नहीं है,
और मुझे बताया गया हमारे एम्बेसडर ने कि जब आपको मॉस्को में बुलाया और आपको पूछा तो आपने कह दिया कि हमारा तो व्हाट्सएप ग्रुप बन गया है, हम तो पहले से ही एक दूसरे के संपर्क में आ गए हैं। मैं चाहूँगा कि इसको आगे बनाए रखिए। मैं भी भविष्य में भारत कैसे होनहार बच्चे आपके इंस्टीट्यूट में आए, आप भी यहाँ लगातार आए और भारत के और रशिया के होनहार बच्चे मिल करके मानव जात के लिए क्या कर सकते हैं, मानव जात की जिंदगी को सरल बनाने में क्या कर सकते हैं, जो जिंदगी में बड़ी मुसीबत से गुजरते हैं, ऐसे लोगों के लिए हम क्या कर सकते हैं। मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा योगदान हमारी तरफ से हो सकता है और अटल टिंकरिंग लैब, अटल इनोवेशन मिशन, उनके लोगों से भी आपका परिचय आया होगा। हम कौन सी रिसर्च करें कौन सी न करें, सबसे बड़ी बात है हम हर पीढ़ी में साइंटिफिक टेम्पर तैयार करें, हर चीज को साइंटिफिकली देखने की आदत बने। वो साइंटिस्ट बने या न बने, लेकिन उसका टेम्पर साइंटिफिक होना चाहिए। इनोवेशन के बिना दुनिया ठहर जाती है। जब इनोवेशन बंद हो जाएगा दुनिया वहीं अटक जाएगी। हमने देखा है मानव जात का विकास इनोवेशन के कारण संभव हुआ है। इनोवेशन होते रहने वाले हैं, चैलेंज नई आते रहने वाली है, हर पल नया लोग देते रहने वाले हैं, उसमें से नया करते चलें और हम भावी पीढ़ी को, मानव जात को क्या कुछ दे सकते हैं। गरीब से गरीब की व्यक्ति की जिंदगी, एक प्रकार से ईज ऑफ लिविंग, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। ये अगर हमारा समय और शक्ति लगेगा तो हमें भी जीवन में संतोष मिलेगा। मुझे खुशी हुई इस नई पीढ़ी को, दोनों देश की नई पीढ़ी को मिलने का मौका मिला। मैं आप सबको हृदय से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। Our deepest gratitude to Prime Minister Narendra Modi for his inspiring words. It's been an enlightening experience not only for these children present in this hall. Oh, I'm sorry. I would allow myself to say a couple of words. This young man asked about the most interesting areas where we can work in. It's artificial intelligence, but without human intelligence, at least at this stage of development, it's impossible to imagine, to fathom that artificial one would be created. And in order to continue with that, those who deal with cognitive sciences understand that the main thing is to be able to work as a part of a team. So I'm really grateful to Mr. Prime Minister for inviting Russian talented young people to India. This is a practical step which shows that you are ready to work as part of a team. So we wish you every success, and once again, thank you very much, Mr. Prime Minister. I thank President Putin and Prime Minister Modi for gracing this occasion. A special round of applause to the two leaders for inspiring the young minds and taking out time from their busy schedule. Our sincere thanks also to all the participant individuals and institutions from Russia and India. We hope that this event marks a new beginning in the long-standing India-Russia relationship. Thank you to all of you. प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मानव विकास के लिए इनोवेशन निरंतर चलती रहनी चाहिए, और जैसा राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि आर्टिफिशियल